Guys, welcome back to class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend, and at this class all about MEG 02 British drama. ब्रिटिश ड्रामा की सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, एंड हाउ वी गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो कि MEG 1 में हुआ, मतलब वही क्वेश्चंस पेपर में आ जाए, तो ऐसी एक वीडियो सीरियसली बन जाए तो सर डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। तो यार हे आई एम विद द क्वेश्चन सीरियसली जो एग्जाम में होंगे तो मैं लिख के देता हूँ गाइस, सेव कर लेना वीडियो को। पेपर में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन वुड कम आउट ऑफ दिस सीरीज दिस, इवन द आर्टिस्ट भी मेंशन कर रहा हूँ यहाँ मैं। अब आपने कहा सर ये कैसे होगा, करने का तरीका क्या, कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ रिवीजन ऑफ MEG 02 है, उसकी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, आप लोग देख सकते हो, इट्स यू कैन गो ऑन दैट वीडियो टू। बट फिलहाल आपने कहा सर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए, तो उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कहाँ से शुरू करना होगा। पहले यार 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन प्लीज ऑन टिप कर लेना। आई रिपीट, ये 5 क्वेश्चन ऑन टिप कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि कल जो पेपर आए उसमें आपको ये 5 में से कोई 2 क्वेश्चन बिगनिंग में मिल जाए और आप बोले यार ये तो कोई ड्रामा से है ही नहीं, सर तो ड्रामा बताया था, ये तो आउट ऑफ द कोर्स आ गया। आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, डेफिनेटली वेरी वही करता है, लेकिन थोड़ा अलग होता है। तो पहले उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आई रियली वांट यू गाइस टू हैव अ पेन एंड नोटबुक अलोंग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ एरिस्टोटल, आई रिपीट, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ एरिस्टोटल ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन ड्रामा। एरिस्टोटल ट्रेजेडी, इफ यू आर स्टडीइंग MEG 05 एरिस्टोटल ट्रेजेडी पता होगी, मैंने एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल ट्रेजेडी की वीडियो भी डाली हुई है गाइस, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। सीरियसली कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ एरिस्टोटल ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन ड्रामा, द फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए, मस्ट बी ऑन योर टिप्स। नंबर 2, डिस्कस रिवेंज ट्रेजेडी। सर रिवेंज ट्रेजेडी हैमलेट एग्जांपल है इसका। डिस्कस रिवेंज ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन इंग्लैंड, रिवेंज ट्रेजेडी। नेक्स्ट वन, discuss romantic exversion. I'm repeating the question guys, this is really important. Discuss romantic exversion in comedies of Shakespeare. Midsummer Night Dream. Discuss romantic exversion in comedies of Shakespeare. Next one, examine the growth of English tragedy. Now guys listen please, ये बहुत important है। Examine the growth of English tragedy since the mystery and miracle plays. सर ये डॉक्टर फोस्टर्स का पॉइंट आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, एनालाइज इलियट कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पेपर में आएगा। एनालाइज इलियट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन कॉन्टेस्ट ऑन एंड 3 वॉइसेस ऑफ पोएट्री। सही, मैंने MEG 5 के स्टूडेंट्स को भी करवाया हुआ क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये ऑन टिप होना चाहिए। तो 2 चीजें दिमाग में आती हैं कि हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या हो, कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, हम चीजों कैसे क्लियर कर रहे हैं, सारी चीजें आपको ऑन टिप होनी चाहिए। शुरू करते हैं ड्रामा वाइज। यस वी नीड टू स्टार्ट ड्रामा वाइज। तो पहला ड्रामा डॉक्टर फोस्टर्स। यस आई एम हैविंग डॉक्टर फोस्टर्स। अब जिन बच्चों ने मेरा इंस्टा आईडी को अभी तो फॉलो नहीं किया हुआ गाइस, डू फॉलो माय इंस्टा आईडी इमीडिएटली, क्योंकि वहां सिर्फ ये नहीं काफी कुछ शेयर करूंगा मैं, तो उसको जरूर जाके फॉलो करें। @classy_rahul, आई रिपीट @classy_rahul, फॉलो माय इंस्टा आईडी। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चीजें भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जंप अप टू द फर्स्ट पॉइंट। सर डॉक्टर फोस्टर्स भाई पहला वो ड्रामा है जिसमें से आरटीसी और एनोटेशन, आई रिपीट एनोटेशन आएगी, कंफर्म आएगी। अब काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर एनोटेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, हाउ वुड आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई एनोटेशन। भाई उसके लिए क्या करो, कैरेक्टर चार्ट बनाओ। सिंपल सा टॉपिक दिमाग में डाल दो, बच्चे मेरे को क्वेश्चन बोलते हैं सर हाउ टू आइडेंटिफाई एनोटेशन। तो सबसे पहले क्या बनाओ, कैरेक्टर चार्ट बनाओ। कैरेक्टर चार्ट में मेजर माइनर कैरेक्टर्स लिखो और उनमें लिंक क्लियर करो। यस, उनकी रिलेशनशिप को डिफाइन करो। जब आप ये करते हो तो उस टेक्स्ट में आप देखो उन कैरेक्टर से कोई यार किसी की बात हो रही है। पहला पॉइंट, राइटर ग्लिम्स, मेजर थीम्स। सिर्फ 2 चीजें, कैरेक्टर चार्ट और थीम्स, अगर ये दिमाग में है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो एनोटेशंस को। यस, एनोटेशन इजीली आइडेंटिफाई होती है अगर 2 चीजें हमें आती हैं। फर्स्ट कैरेक्टर चार्ट, सेकंड थीम्स।
मैं खुद पढ़ता हूँ, प्लीज इसको देखना अगर आप ये समझ पाओ। ये एनोटेशन ही डॉक्टर फोस्टर्स की 2 मेजर एनोटेशन डाली है मैंने। His faith is great, I cannot touch his soul. His faith is great, I cannot touch his soul, but what I may affect. What? I repeat, but what I may affect his body with I will attempt, which is but little worth. ये डॉक्टर फोस्टर्स है। मैं फिस्ट ऑफ सीरीज बोल रहा था, अब यहाँ पे मैं उसको डिटेल में बताऊँ तो ये कॉन्टेक्स्ट आएगा और फिर एक्सप्लेनेशन में आएंगे। 3 चीजें डालनी है, रेफरेंस, कौन सा प्ले है और कौन सा राइटर है। नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट, किसकी बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है, एक्सप्लेनेशन जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये आपको एनोटेशन में करना है। नंबर 2 टेक्स्ट। नाउ फोस्टर्स मस्ट दो नीड्स टू बी डैम्ड। आई रिपीट, नाउ फोस्टर्स मस्ट दो नीड्स बी डैम्ड एंड कैनेस्ट though not be saved, and canst though not be saved, what boots it than to think of gods or heaven? I repeat, what boots it than to think of God or heaven? Away with such fancies, away with such fancies, and despair in God and trust in Benjuba. despair in God and trust in Benjuba. देखो बेंजुबब से पता चलता है आपको भाई डॉक्टर फोस्टर से आपको पता है डॉक्टर फोस्टर है। मैं आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ तो कई बच्चे बेचारे बहुत परेशान है, सर वी कैन नॉट अफोर्ड द ऑनलाइन क्लासेस और हमारे पास नोट्स भी नहीं है। दोज हु वांट टू हैव द नोट्स और जो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डू ज्वाइन क्रैश कोर्स। आज मैं डाल दूंगा, इंस्टा पे डालूंगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालूंगा लास्ट क्लासेस द क्रैश कोर्स सीरीज, यहाँ भी आ रहा होगा आपको लोग। तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्कोर योर ड्रीम मार्क्स। जंप अप टू द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम डॉक्टर फोस्टर्स। Discuss Dr. Foster as essentially a Renaissance tragedy. Yes, it is a Renaissance tragedy. There is no doubt about it. पुनर्जागरण बोलते हैं हिंदी में, सीरीज बोलते हैं Renaissance tragedy। उस पे क्वेश्चन है, कमेंट है। डॉक्टर फोस्टर्स ट्रेजेडी ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेनेसांस और रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। Discuss sin and redemption in Dr. Foster's. Yes, sin and redemption. Discuss sin and redemption. I hope you guys are writing, guys. मैंने आज पे सीरीज ही बहुत धीरे रखी हुई है ताकि आप लोग आराम से लिख पाओ। Come next one. The irony of Dr. Foster's carries lies in tragic dilemma. I'm repeating the question, guys. Listen carefully. The irony of Dr. Foster's. The irony of Dr. Foster's career lies in his tragic dilemma. Discuss the statement, the reference of Dr. Foster's. Last, not the least, this is a really important question. Critically examine Dr. Foster's as a tragedy of human heroism. Critically analyze Dr. Foster's as a tragedy of human heroism. Human heroism. ये आपको ऑन टिप होने चाहिए अगर आपको इस पेपर को क्रैक करना है विद 70+, प्लीज 70+। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट अगेन, द मिडसमर नाइट ड्रीम। अब कई बच्चों ने बोला हमने मिडसमर नाइट ड्रीम नहीं किया, हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये तो पक्का आएगा पेपर में, 100% आएगा, ये करना ही करना है। आप लोग सब छोड़ दो, मिडसमर नाइट ड्रीम करो। डॉक्टर फोस्टर्स, मिडसमर नाइट ड्रीम, हैमलेट, तीनों घोट के पीने आपने, इनको छोड़ने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन तीनों से एनोटेशन भी आएगी और क्वेश्चन भी आएगा। तो पहले बात करते हैं किसकी, एनोटेशन की। यहां देखना आप आइडेंटिफाई करते हो या नहीं करते। लुक एट हियर, व्हाई शुड यू थिंक दैट आई शुड वो इन स्कॉन। I'm repeating the line. Why should you think that I should woe in scorn and derision? I repeat, scorn and derision never come in tears. Scorn and derision never come in tears. Look when I woe, I weep, and was so born, and born. So born in the naivety all truth appears. In the naivety all truth appears. ये डिफाइन करता है सब, दोनों की स्टेटमेंट ही दोनों बात करते हैं, वहां डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली ऐसा होता है। एंड देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट और आई कैन से द एनोटेशन फ्रॉम मिडसमर नाइट ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको आना चाहिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम इन द टाइटल ऑफ द प्ले अ मिडसमर नाइट ड्रीम। आई रिपीट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम? What is the significance of dream in the title of the play A Midsummer Night Dream? Number 2, question number 2. Discuss the basic plot. Discuss the basic plot of romantic comedy with the reference of Midsummer Night Dream.
बेसिक प्लॉट क्या भाई, उसको कैसे क्लियर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को हमें डिफाइन करना है, वी नीड टू एनालाइज इट। व्हाट इज द रोल ऑफ प्ले विद इन अ प्ले, दो में आता है, इसमें आता है, हैमलेट में आता है क्वेश्चन सेम, वहां हैमलेट लिखे हैं, मिडसमर नाइट ड्रीम लिखेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले इन मिडसमर नाइट ड्रीम, नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन सब कुछ है यार, क्यों, क्योंकि दो चीजों को हाईलाइट करता है। डिस्कस द जेंडर इश्यूज इन प्ले, डिस्कस द जेंडर इश्यूज, जेंडर इश्यूज हैं इसमें हमारे पास। दूसरा इश्यू का मतलब था कमेंट मिडसमर नाइट ड्रीम एज अ पेस्टोरल स्पेस, क्या इट इज। अब आपने कहा सर आंसर कैसे देते हैं, अब ये आंसर कहां से मिलेंगे, ये सारे के सारे आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे, सारे के सारे आंसर, ऑल यू हैव इन योर नोट्स, सीरियसली सारे के सारे आपको नोट्स में हैं आपके, तो वेटिंग व्हाट, हैव इट एंड स्टार्ट योर प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट वन, Hamlet. Now what do you mean by this particular play, the work of William Shakespeare? Sir, William Shakespeare का मिडसमर नाइट ड्रीम भी था, दोनों उसी के हैं, ये कुछ फेवरेट है। To be or not to be, that is the question. Yes, to be or not to be, that is the question, whether it is nobler in the mind of suffer, whether it is nobler in mind to suffer the sling and arrows of the outrageous, the sling and arrows of the outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. इसकी आइडेंटिफिकेशन to be or not to be सीरीज से बदल रहा है हैमलेट है। नेक्स्ट, such as the that, I repeat, such an act that blurs the grace of blush or modesty, such an act that blurs the grace and blush of modesty, cause which you hypocrite, yes, cause which you hypocrite, takes off the rose from the fair forehead, takes off the rose from the fair forehead of innocent love, and sets the blister there, take marriage vows as false as disser. सर ये ही लाइन आपको बताएगी, ये हैमलेट है। Make marriage vows as a false as disser, oath to such a deed, oath to such a deed. Again, the interpretation from Hamlet. First question, discuss Hamlet as a tragedy. ये क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, स्टेट फोर्थ क्वेश्चन होगा ये। क्रिटिकल कमेंट Hamlet as a revenge play, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। Bring out the enormous significance of solocacy in Hamlet. Yes, this would come. Solocacy in Hamlet. Analyze the use and significance of rhetorical device. सर एक क्वेश्चन है ना, आधे बच्चे सर पकड़ लेते हैं, rhetorical device क्या है, इसको कैसे क्लियर करेंगे। How I'm going to write or answer rhetorical device and what really I'm supposed to write on this. उसके कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है, हाउ द स्टोरी मूव्स ऑन, प्लॉट को कैसे स्ट्रक्चर किया और किस सीक्वेंस में किया, इसका आंसर नोट्स में है गाइस, डू चेक। Claudius rather than Hamlet is a protagonist of play. I agree. मतलब मैं सीरीज एग्री करता हूँ, हाँ क्लोडियस शुरू से कहा कि तो वही डोमिनेंट था, हैमलेट तो कहीं था ही, वो तो बेचारा बहुत बिजी इन इस डायलेमा, करूँ ना करूँ। पिग्मेलियन, अच्छा पिग्मेलियन मेरी लिस्ट में नहीं आता है कि आर्टिस्ट ही आएगी उसकी लिस्ट में नहीं आता, मैं नहीं मानता पिग्मेलियन आता है। मेरी लिस्ट में हैमलेट आता है, डॉक्टर फोस्ट आता है, मिडसमर नाइट ड्रीम आता है, आगे जो आप नहीं बताऊंगा पक्का। पिग्मेलियन नहीं आता तो इसकी मैंने आर्टिस्ट नहीं दी है, नोट्स में है गाइस। सो आई एम ओनली अ कॉमन इग्नोरेंट गर्ल, देखो आइडेंटिफाई थी, I am only a common ignorant girl in my station. I have to be careful. There can't be any feeling between now, the like of you and like of me. Like of you and like of me. Sir, कैसे समझा? लड़की ने बोलता था फ्लावर गर्ल, उसको पता था वो कोई फीलिंग नहीं रखता, लेकिन वो तो फील नहीं रख पाई ना, उसको लगा था कि यार वो प्यार करता है मेरे से। Now, does show use of myth contribute to the enrichment of Pygmalion? Yeah, use of myth. How does Shaw attack social snobbery? ये क्वेश्चन पेपर में आएगा गाइस। How does Shaw राइटर नाम है, attack social snobbery and class difference in Pygmalion? क्लास डिफरेंस को हाईलाइट किया उसने, पिग्मेलियन में पूरा डिफाइन करेगा एक चीज को। जंप अप नेक्स्ट वन, द अल्केमिस्ट, अगेन नॉट इन माय लिस्ट ऑफ एनोटेशन। व्हाट एल्स, आई रिपीट, व्हाट एल्स, ये तो आ गया क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन आया है इस बार है एनोटेशन का, पेपर मैंने नहीं देखा भाई। What else, and that you will make her royal with the stone and emperor the yourself be the king of bottom. अरे भाई क्या alchemist है ना, उसके पास स्टोन है,
टर्न टू बी अ गोल्ड, मतलब सीरियसली बेवकूफ बनाने के लिए एक तो चाहिए। तो ये आइडेंटिफिकेशन देखिए, एल्केमिस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द एल्केमिस्ट इज सटायर ऑन ह्यूमन फूलीज एंड फॉबीज। यस, सटायर है, बिल्कुल है। ह्यूमन फूलीज को फॉबीज पे फूल है, सीरियस उनको डिफाइन कर रहा है। एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्केमिस्ट, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया है एल्केमिस्ट के। डू यू थिंक एल्केमिस्ट पॉइंट्स ऑफ द लोअरिंग द स्टैंडर्ड जजमेंट, या लोअरिंग द स्टैंडर्ड जजमेंट, give reason or evaluate it as a comedy. Next one, the alchemist is satirical comment, ये तो हो गया। Next one, playboy of the western world, sir, yes, ये मेरी favorite list में आता है, nothing wrong and बिल्कुल आता है। playboy of the western world, Christy मोहन, define करें चीजों को, and we guys need to clear this from the beginning till the last। the playboy of the western world, from this out, I repeat, from this out, I will have no one to accompany when all shorts of bringing me their food and clothing. The way they have set their eyes upon a gallant orphan clapped his father with one blow to grease the belt. जो blow है ना, ये identify कि भाई ये कहाँ से है? The playboy of the western world से है। Question number 1. Discuss the playboy of the western world as a folk play. Yeah, it's a folk play. We can say it's a folk play क्योंकि कहानी की तरह बताया गया, and we know the story. Discuss chastity, or I'll repeat the Christie. Discuss Christie role as a master storyteller in a play of the Western world. हाँ, storyteller था यार, कुछ नहीं किया उसने, बाप को कोई नहीं मारा, but story में ऐसा क्रिएट किया, एक हीरो आया, अपने बाप को एक ब्लो से मार दिया उसने, and then he become a hero. Examine play of the Western world as an extravagant comedy. ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, extravagant comedy भी शॉर्ट नोट भी आ सकता है। Examine play of the Western world as an extravagant comedy. Next one, examine the play of the Western world as a builds go Roman drama. हाँ, एक कैरेक्टर को बढ़ते दिखाया उन्होंने। How character progress, मतलब एक dominant protagonist पूरी स्टोरी के अंदर कैसे बढ़ता है, कैसे रोल प्ले लेता है पूरा अपना, उसको हाईलाइट किया। builds go Roman इसको कहते हैं। Next one, murder in cathedral, again my favorite। ये वो पांच में, चौथा था वेस्टर्न वर्ल्ड, पांचवा है मर्डर इन कैथेड्रल, ये मेरा फेवरेट है। 7 years and the summer is over, 7 years ही बता देगा, मर्डर इन कैथेड्रल है। 7 years and the summer is over, 7 years since the archbishop left us, he who was always kind to his people, but it would not be well if he should return। काइंड था, लेकिन अच्छा नहीं होगा अगर वो वापस आए, तो सीरियस से अच्छा नहीं होगा, उसको वापस आना भी नहीं चाहिए। कौन बोला था भाई? कोरस ने बोला था, मैंने नहीं बोला था। Come on, next one. Forgive us, O Lord, we acknowledge ourselves as a type of common man, of the men and women who shut the door and sit by the fire, who fear the blessing of God and loneliness of the night of God, and surrender require the deprivation afflicted. Yes, the fear, it mentioned the murder in cathedral. Question number 1. It is not in the time that my death shall be known, it is that out the time that decision is taken, if you call that a decision to which my whole being gives entire consent, I give my life to the law of God above the law of man. Law of God above the law of man. Amen. The chorus of the murder in cathedral reflects the growth in Thomas Becket. Yes, we can. Question है, first question. The chorus in the murder in cathedral reflect the growth in Thomas Becket. Discuss the nature of the fourth temptation. ये question आएगा, 100% आएगा। Discuss the nature of the fourth temptation, Becket confession in murder in cathedral. The last, not the least, comment on the use of device chorus in murder in cathedral. अब आता है हिंदी पिक्चर फिल्म की थर्ड क्लास पिक्चर का थर्ड क्लास सीन, लुक बैक इन एंगर। सर इसकी आर्टिस्ट्री भी आ सकती है, कुछ है ही नहीं इस पूरे प्ले में ना, मतलब सबसे मरा हुआ प्ले जो है ना, ऑनेस्ट मरा हुआ प्ले, दैट डोंट हैव एनी क्वालिटी, दैट इज लुक बैक इन एंगर। कहता बट यू सी आई वाज द ओनली वन हु केयर्ड, हिज फैमिली वर एम्बेरेस्ड बाय द होल बिजनेस, एम्बेरेस्ड एंड इरिटेटेड, वी ऑल ऑफ अस वेटेड फॉर हिम टू डाई, दैट इज लुक बैक इन एंगर। एक और आर्टिस्ट, दैट इज एनोटेशन। Every time I sat on the edge of the bed to listen to him talking or reading to me, I had to fight back my tears. At the end of the 12 months I was veteran. You see, I learned at the early age what it was to be angry and helpless,
and I can never forget it. So this is the annotation that you guys need to prepare. तो मैंने मेंशन की है, आप लोग क्लियर करोगे और ऑन टिप भी करोगे. First question. Comment to the title of the play, The Look Back angle. Next one. Show the importance of the man-woman relationship in a look back angle. And the last. सबसे जो क्वेश्चन यही है शायद. Analyze the concept and the young man contest to play look back angle. उस कॉन्टेस्ट को डिफाइन करें. जंप अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब वो क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, हमारे लिए बहुत मैटर करता है. वेटिंग फॉर गॉड आउट. नाउ व्हाट डू यू मीन ऑफ वेटिंग फॉर गॉड आउट, हाउ टू क्लियर. सबसे अच्छा प्ले पूरी बुक में ये. Can I discuss Samuel Beckett Waiting for Godot as a tragic comedy? Yeah, it is a tragic comedy. Outline the changes that Lucky and Pozo undergo during the play Waiting for Godot. जो उसके अंदर आते हैं under the Godot. Comment about the structure of the Waiting for Godot. Now bring out the full significance of the title Waiting for Godot. And the last, nothing happens. Nobody comes, nobody goes. It's awful. I repeat, nothing happens, nobody comes, nobody goes. It's awful. Analyze the scene of metaphysical anguish expressed in Waiting for Godot. Short notes. Yes, we have the short notes, and then tata bye bye and start your preparation, guys. Number 1, Claudius. Number 2, Bottom. Number 3, Eliza. First, Claudius. Number 2, Bottom. Number 3, Eliza. पक भी कर लेना यार, पक कर लो तो बहुत होगा, आपके लिए अच्छा होगा. The Theatre of Absurd. Helen and Dr. Foster's Hermia Dream. And last but not the least, Widow Quinn. तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने. अब करना क्या है? You know what to do, guys. Start, like, share and subscribe if you think it's worth to watch. Catch you very soon with a new video and the live session today at night. Be ready, guys.